गेंशिन इम्पैक्ट की लाइव स्ट्रीम में फिर स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं गेंशिन इम्पैक्ट की एक लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आज खेलेंगे गेंशिन इम्पैक्ट। तो गेट रेडी टू गेंशिन। वैसे कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं चला क्या दिक्कत थी, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रीम बीच में ही बंद हो गई थी और दोबारा मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की बट स्टार्ट नहीं हुई। और आप लोग को बताइए, जो भी अगर ऑनलाइन हो तो मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और गेम स्टार्ट होने ही वाला है और जल्दी से आ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं अपना लाइव स्ट्रीम। अपनी लाइव स्ट्रीम को शुरू करते हैं। स्टार्ट हो जा भाई। बहुत टाइम लगाता है यार, कभी कभी लोडिंग स्क्रीन फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। और बताएं कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी आप सभी लोगों की। आज का दिन तो बहुत ही खतरनाक बिजी गया। पूरा सुबह से सुबह से नहीं, दोपहर से जो लगे हैं और अब जाके फ्री हुए हैं। लगातार सब चीज़ करने में बैंड बज गई। सोचा थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए एक छोटी सी स्ट्रीम कर ली जाए। छोटी सी क्या, एक प्रॉपर लाइव स्ट्रीम ही होगी। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम लोग डोमेन कर रहे थे। कल डोमेन बीच में ही बंद हो गई थी। तो पता क्या दिक्कत हुई थी, मुझे समझ में नहीं आया। डोमेन बंद चले गई। डोमेन से ही शुरू। मिस्टीरियस रूइन। स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। और जल्दी से सब लोग आ जाइए, जो लोग भी हैं हमारी लाइव स्ट्रीम में। और प्लीज़ बताइए ऑडियो और वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ताकि मैं उसको एडजस्ट कर सकूं। कल ऑडियो को कुछ इशू जा रहा था, तो आज देखते हैं वो इशू रहता है कि नहीं रहता है। आज वो इशू नहीं होना चाहिए। मैंने की सेटिंग्स चेंज नहीं करी हैं। It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah! And there's so many plants! It's so pretty! Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir?
Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kinda strange. If that's true, then... A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Into the wind. Take flight! There is no escape! The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night! Embrace the ice! My apologies! Everybody stand back! Into the wind. Shine down! Ha! कल हम लोग ने यहाँ तक तो पार कर दिया था अंदर चला गया था
The wind knows me. Take flight! One with nature. कल हम लोग यहाँ तक आए थे और अभी भी कोई ऑनलाइन नहीं आया है, क्या बात है? लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है गेंशिन के पर। फिर भी हम आने की कोशिश करते हैं। The world remains constant over the centuries. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Into the wind. Clouds high. The birds call. Illusion shattered! Inazuma shines eternal! ओके, अब यहाँ से ही थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है। यहाँ पे mysterious message. After 6 years entering the temple, I finally understand the previous elevator was underground at the top of which
Burn my knight! Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Unthinkable! Teamwork is dreamwork! The wind knows me. Absurd! Torn to oblivion! टर्न ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? टर्न ऑफ, ये टर्न ऑफ है, दोनों टर्न ऑफ है। ओके, अच्छा ये कहाँ है? गेट खुलेगा तो गेट ये वाला खुलना चाहिए। ये कौन कोई है भाई जो बता सके यहाँ पे क्या करना है। There is no escape!
It's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. कहीं लेके जा रहा है ये It's getting brighter! Oh, it looks so beautiful! Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. look like it's like a tomb These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. hello It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to Hello, master bhai. at Kya- least kya- 20 languages before they graduate. Thank you He's for not coming. serious, right? Please There's like still and something off subscribe about this if you place. are new, तो The elemental energy here is too concentrated. वीडियो को like कीजिए, अपने The friends को scent of subscribe, life. forward कीजिए, channel को Is it subscribe trying to करना tell us बिल्कुल भी something? मत भूलिएगा। Is Let's this it? go. It is it? Analyzing. ये कौन बोला? Sound system? There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. क्या दिखा दे भाई? ओह, बड़ी अच्छी बात है भाई, सब अच्छे ही होने चाहिए। Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. मुझे निकालनी चाहिए। A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. आगे तैयारी करो। Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert
My eternal lord chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No! Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. भाई गेम प्ले भाई बहुत बड़ा इसीलिए तो खेलता हूँ मुझे गेट रॉड बेटा two devotees follow the complete. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. That's good. Make a note of it. जनवरी में आइएगा तो कोशिश करिएगा कि When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. वैसे कितने दिनों के लिए आएंगे? इंडिया आएंगे. And I'll return every last one of your mad, sorry,
your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. 15 से 20 दिन के लिए ही आऊंगा. अच्छा 15 से 20 वापस That must have been rough. But he seems to have figured things out now. कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. शायद आप Feb में It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving! Feb में हाँ भाई Feb में लेकिन last Stop time मुलाकात yelling. नहीं हो पाई थी. हाँ भाई कोई मुलाकात नहीं हुई थी. ओह डोमेन कंप्लीट हो गई क्या? चेस्ट मिल गई. छोटी थी बस. कहाँ पे क्या चीजें थी? और भी कुछ ऐसा है यहाँ पे? शायद तो नहीं. लास्ट टाइम चेस्ट छोटी थी. चेस्ट वगैरह पड़ी हो. कुछ नहीं है वैसे तो. दिख तो कुछ नहीं रहा है. चेक देखो घूमने में क्या जाता है. तो लीव ही करना है डोमेन. चलो लीव करते रहो. लीव द डोमेन. तो इस बार भाई कंफर्म है ना मुलाकात होगी. आप लखनऊ या मुझे अलीगढ़ आना पड़ेगा. आप आओगे तो घर में सभी से मुलाकात हो जाएगी. हाँ भाई घर में सभी से मुलाकात हो जाएगी. बहुत टाइम हो गया है किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है. मिले नहीं है. ये क्या? Time to go. टाइम टू गो. हम लोग कहीं और आ गए क्या? नहीं वहीं है. हम लोग यहाँ से चले गए. हाँ ये लोग चले गए हैं. हम लोग को वापस जाना है. यहाँ तो कोई रास्ता है नहीं. गड्ढे में गिरे थे. हम लोग गड्ढे में गिर गए थे. और आप अगर लखनऊ आ जाएंगे तो आप भी घर में सबसे मुलाकात कर लेंगे. भाई हम तो आएंगे ही भाभी जी से मिलने. बिल्कुल भाई आइए मुलाकात कर जाते हैं भाभी जी से. ओह न्यू पैच न्यू जी का. चलो पैदल निकलते हैं ताकि वो पहले उसके लिए तो पैदल निकलने से पहले हमें ऊपर आना पड़ेगा. ऊपर आ जाए ताकि ऊपर जा सके बाहर निकल सके. वगैरह
सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए पहले। कुछ पता नहीं ऑडियो वगैरह का, ऑडियो ठीक आना चाहिए। डोमेन सेटिंग्स कंप्लीट। और हम कलेक्ट करते हैं 5 फिशेस, ये दैट्स गुड। अच्छा ये कुछ शुरू हो गया है, इसको भी खेलना है और इसको भी खेलना है। पहले मुझे 5 हमें विशेष मिल चुकी हैं। हमें जाना है इस पर, तो रास्ते में देखते हैं और टेलीपोर्टर अनलॉक कोशिश करेंगे, टेलीपोर्टर अनलॉक करते हुए चलें। तो सबसे पहले यहाँ वाला टेलीपोर्टर अनलॉक करते हैं। ठीक है, टेलीपोर्टर भी करते हुए चलते हैं। चेस्ट वगैरह कुछ नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं अभी सिर्फ और सिर्फ टेलीपोर्टर अनलॉक कर रहा हूँ, एक्सप्लोर स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, टेलीपोर्टर अनलॉक कर रहा हूँ, ताकि मैं जब एक्सप्लोरेशन शुरू करूँ तो इजी हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि अभी मैंने कुछ कंप्लीट ही नहीं किया यार, गेम ही नहीं खेला, जैसा सब आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं है। My apologies! नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एक बिल्डिंग है। ओह क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत है। One with nature. काफ़ी खूबसूरत बनाया इन लोगों ने स्टैचू, डिटेलिंग भाई गेम पे बहुत ज़्यादा है यार। गेम तो ऐसे ही देख के दिल खुश हो जाता है। ओके हमें यहाँ जाना है, अब इस वाले को नेविगेट करते हुए चलते हैं। Wherever in this world I roam, चढ़ना है I carry memories of my home. इधर से। This blade. It is the last link I have to the land of my birth.
The wind knows me. बहुत ज़्यादा है रेत में आपके पैर भी दिखेंगे कुछ देर तक। इस जगह पे तो आसानी से जाया जा सकता है। गलती तो नहीं करती इस टाइप One with nature. लग तो रहा है मैंने। चलो इसको अनलॉक कर लेते हैं। 40 वही मिलेंगे। 40 शायद अपने पास। The wind knows me. Illusion shattered! I'll take my leave. 40 प्रीमोस मिलेंगे। Brings a smile to my face. तो मुझे उसकी डोमेन भी करनी है यार। 40 प्रीमोस तो मिल गए, ठीक है। ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाने का कोई ऊपर जाने के कोई तरीके हैं कि नहीं है? शायद यहाँ से चढ़ा जा सकता है। इस तरह से शायद। One with nature. कंफर्म नहीं कर सकते। ट्राई करते हैं, थोड़ा आते हैं कि नहीं चढ़ सकते। मुश्किल है। मे भी शायद अगर स्टॉपेज कहीं मिल जाए तो चढ़ जाएंगे। अगर स्टॉप नहीं मिला तो नहीं चढ़ पाएंगे। स्टेमिना का फूड ले लेते हैं। हाँ, फूड स्टेमिना फूड। मेरे पास स्टेमिना फूड तो बहुत है। स्टेमिना को 50 स्टेमिना ले लेते हैं। भाई 5 मिनट तक हम लोग स्टेमिना नहीं ले सकते। दिक्कत हो जाएगी। पे वो मिल जाए रुकने का प्लेस। अच्छा चढ़ना है, शायद यहाँ रुकने का प्लेस मिल जाए। खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। गया मुझे वही कह रहा था। अरे ये कहीं गिरा तो नीचे जाएगा। ये है क्या? स्टैचू टेलीपोर्टर लग रहा है। स्टैचू 7 है शायद। एक सेकेंड, स्टैचू 7 है क्या? स्टैचू 7 नहीं है। चलो उधर जाके पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। Into the wind. पहले मार
अनलॉक करते हैं वाला। Follow the wind. छोड़ो, हम इसको बाद में अनलॉक करेंगे। कैंसिल नेविगेशन। ठीक, हम इधर से आते हैं, हम इसको मार्क करते हैं और इस पे टेलीपोर्ट होते हैं। हम उधर से नहीं जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे। एक सेकंड, ये वाला टेलीपोर्टर तो उधर वाला आता है। अच्छा, ये गलत रास्ता है, हम लोग को इधर से आना पड़ेगा, इस वाले रास्ते से नहीं आ पाएंगे। ये तो हॉस्पिटल वाला रास्ता है, जो हम लोग हॉस्पिटल आए थे, हॉस्पिटल वाला रास्ता है। पता करते हैं और इस तरफ चलते हैं। तो उल्टा जा रहा हूँ, ये रास्ता। अरे यार, यहाँ पे एक रास्ता था इस जगह से, ये वाले रास्ते से ना। अरे गलत रास्ता पकड़ लिया, ध्यान नहीं दिया, गलत रास्ता पकड़ लिया। इस वाले रास्ते से जाना, इधर, यहाँ से। एक सेकंड, इसको इस जगह पे मार्क कर लेते हैं ताकि हम लोग इस तरफ नेविगेट हो, नेविगेशन में इजी हो।
करते हैं, डिलीट, एंड इसको नेविगेट करते हैं। ठीक है, सीधे इन्हीं की तरफ होता है। ये क्या है? टेलीपोर्टर है। इधर है। हाँ, हो सकता है स्टैचू ऑफ सेवन हो, चांसेस हैं। Stretch of 7 भाई इनके हाइडआउट। बिल्कुल भाई, भाभी जी से मिलिएगा। कहाँ लगता है चलेगा हैदर भाई। बाय बाय भी नहीं किया हैदर भाई ने। Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa! The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino! He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to... So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it! Well, you better start talking or you'll be sorry!
You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. The sage are the creators of the new god. Huh? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis, and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen.
still refused to Lord Kusanali. Never imagined the god to this creature. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. As you wish. Chieftain house. Stretch of 7 here. The wind knows me. What you got? One with nature. Statue of 7 unlocked. Tools कर लिए हैं ठीक है स्टैचू ऑफ 7 सारे अनलॉक फिर छठा पूरे तीनों हो गए ठीक अब बाकी हम आराम से करेंगे बाकी आराम से कब गेम खेलते जाएंगे वैसे ही करते जाएंगे अब बाकी बचे हैं 23 और ढूंढने हैं 23 और ढूंढने हैं वर्ल्ड क्वेस्ट 2 क्लेम कर चुका है डॉक्सन राइडर ये बहुत बाकी है मैंने खेला ही नहीं गेम इतना अच्छा लगा मैं पूरा गेम एक बार में खेल लूँ वह क्या करना है मज़े आ जाएंगे पूरा गेम एक बार में मैं खेल लेता हूँ चलो चिफ्टन हाउस के पास टेलीपोर्ट करते हैं
और आज के स्ट्रीम को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के स्ट्रीम को यहीं पे क्लोज करते हैं और क्योंकि कुछ काम है और वो भी काम निपटाना है, जाके कुछ सामान लिया है, चीज़ों को आगे शुरू किया जाए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फिर से लाइव स्ट्रीम करूँगा और चीज़ों को आगे देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching me on this stream. थैंक यू फ्रेंड्स। और कल फिर आइएगा, कोशिश करेंगे कल फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीम करने का। थैंक यू। चलिए हम स्टॉप करते हैं। So this is a day in the life of the traveler.